जिम का सबसे अनोखा लड़का है। अरे बाप रे बाप, लास्ट वीडियो में तुमको सब पसंद किया। हाँ बहुत ज़्यादा। और कैसा भाई लोग, आ गए। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज है सैटरडे, आज वर्कआउट सेशन है चेस्ट ट्राइसेप का। तो अभी स्टार्ट करेंगे। आज कोई है नहीं पार्टनरशिप, आज हम अकेले सोलो है। और मेरा 3 दोस्त, एक दीप भारद्वाज, एक रोहित और एक मोनू, ये लोग तीनों अपना मिलकर करता है साथ में। और हम अकेले हैं सिर्फ, मेरा कोई पार्टनर नहीं। तो आज अकेले चेस्ट का वर्कआउट करेंगे। थोड़ा सा वार्म अप करने के बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो बाय द वे मैं जिस जिम में हूँ ये अभी थोड़ा रिन्यू हुआ है, तो इसका आपको वॉक अराउंड दे देता हूँ। आर्नल्ड जिम रामगढ़ पहले से काफ़ी अच्छा हो चुका है। गुरुजी मिनी हमारे गुरुजी ये रहे, अभी आए नहीं है, एब्सेंट है। तुमको सब पसंद किया। हाँ बहुत अच्छा। जिम का सबसे अनोखा लड़का सबसे ज़्यादा मजा यही करता है जिम में। देख के मुंह का ना तोड़वा रहे भाई भाई भाई। तो अभी फ्लैट बेंच प्रेस हुआ, अभी फ्लैट डंबल प्रेस मारेंगे। 12 का 15, 12 केजी का 15, 15 केजी का 12 और 17 केजी का ट्राइसेप्स।
चेस्ट दिखाओ। मिस्टर रामगढ़ 2021 अपना तीसरा सेट मारते हुए 17.5 kg। आप गाड़ी सब्सक्राइब कीजिए पहले, जिनका होकर आप जिनका सदस्य को सपोर्ट नहीं करते। अभी अपन चेस्ट का वर्कआउट करेंगे। इंक्लाइन डंबल प्रेस, बेंच प्रेस करते ही है, मतलब मेरा अलग है। इंक्लाइन बेंच प्रेस में आप बस इंक्लाइन डंबल प्रेस करेंगे। We are in the frame. Line frame press. Dumbbell press. प्रो लोग सब यहीं खड़े हैं। 1 2 3 तो मिस्टर रामगढ़ जीत चुके हैं अपनी कैटेगरी में। और ये तो बहुत अच्छी इंस्पिरेशन है जिम के, जब पहली बार आए तो कहीं को देखकर हम इंटरेस्ट लेते हैं। हार्ड वर्क का परफेक्ट एग्जाम्पल। फ्लैट में प्रेस, फ्लैट डंबल प्रेस हो गया, इंक्लाइन डंबल प्रेस हो गया। अब बारी है इंक्लाइन डंबल प्रेस का। उसके बाद मारेंगे बटरफ्लाई, जैसे कंप्लीट। चेस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब बारी ट्राइसेप का। आप लोग एक बात बता दूं कि अगर वर्कआउट करते वक्त अगर आप लोग का कंसंट्रेशन ठीक नहीं है उस वर्कआउट के थ्रू, अगर आपका फीलिंग नहीं है तो फिर आप लोग वर्कआउट करें, उसका इफेक्ट बहुत धीरे धीरे आएगा। वर्कआउट का एक बहुत मेन टिप है, मेन टिप बोले तो उसका एक रूल है कि आप जितना ज़्यादा स्क्वीज करो और जितना स्ट्रेच करो उससे आपको फ़ायदा है। जितना ज़्यादा स्ट्रेच और जितना ज़्यादा स्क्वीज करोगे उतना ज़्यादा मसल वर्क करेगा। तो एक्सरसाइज करिए तो कंसंट्रेशन होना चाहिए और फील करिए कि ये जिस मसल पार्ट का एक्सरसाइज हो रहा है उसको थोड़ा फील कीजिए। अगर उस पर स्ट्रेस पड़ रहा है तो समझ लीजिए वो आप लोग का बॉडी पार्ट इम्प्रूव हो रहा है। और डाइट तो है ही, डाइट मेन है, बिना डाइट का कुछ नहीं है। 50% डाइट है, 50% हार्डवर्क एक्सरसाइज है, दोनों बराबर है, एक नहीं तो कुछ नहीं।
बहुत पसीना पसीना हो गया। आप लोगों को बता चुका हूँ कि आज मेरा कोई पार्टनर नहीं है, तो वीडियो बनाने के लिए कोई था नहीं। थोड़ा बहुत दोस्त लोग हेल्प कर दिया था उन्होंने, बट एक भैया हैं जो हेल्प कर रहे हैं शुरू से लेकर लास्ट तक। उनका नाम है सोनू भैया। ये है सोनू भैया। जब पहली बार टीम आया था तो इनको देख कर इंस्पायर हुआ था। अभी पहले आप लोगों को बताया था, तो इनका बॉडी सच में देख कर लगा ना कि कोई रोडीज़ है, मतलब इस जिम में भी कोई रोडीज़ है। डायमंड टिप्स है ट्राइसेप का बेसिक। Gave you too much, now I'm swallowed. Now I'm a fool while you're breaking rules. Dangerous oh, go on, just do what you do. मेरा जो फिजिक है ये थोड़ा मेन फिजिक वाला, बॉडी बिल्डिंग वाला नहीं है, बट बॉडी बिल्डिंग खेल लगा क्योंकि अपर बॉडी का 50 पॉइंट और लोअर बॉडी का 50 पॉइंट। तो लास्ट कंपटीशन जो हुआ था अपर बॉडी सबका था, बट लोअर बॉडी में किसी का अच्छा कंडीशन में था, तो मैं जो भी कंपटीशन जीता वो सिर्फ मेरा लोअर बॉडी का वजह था। अभी ट्राइसेप का लास्ट एक बाकी है, स्कल थ्रस्टर, वो करेंगे बस बाकी जहाँ भी बैठ रहे हैं भैया इतनी टेस्ट कर रहे हैं, देखते इस बार करेंगे कि नहीं। फुल सेफ्टी। जहाँ भी बैठ रहे हैं, चाहे बटरफ्लाई मार रहे हैं, वहाँ का भी बेंच और बैक रेस्ट को ये सैनिटाइज कर रहे हैं, हर चीज़ का। कोरोना अभी गया नहीं है। आज का टेस्ट और ट्राइसेप वर्कआउट हो गया कंप्लीट। ट्राइसेप का और चेस्ट का घर में लेके गया, बाद में देख वेट करा दी। वीडियो आते रहेगा मोटिव ब्लॉगिंग का भी और लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग है। और ये मेरे लाइफस्टाइल का बेस है, क्या क्या चल रहा है ज़िंदगी में क्या नहीं, वो आप लोगों को दिखाना है। बहुत दिन से रामगढ़ का चक्कर नहीं मारा है। रामगढ़ बोले तो रामगढ़ झारखंड में है। आप लोगों को लास्ट वीडियो में पता चल गया कि मैं कहाँ से हूँ, रामगढ़ झारखंड से। ये इसलिए कि जाते जाते अगर हाफ टी शर्ट में जाएंगे तो हवा लगेगा और तबीयत ख़राब होने का चांसेस ज़्यादा है। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच और सपोर्ट कीजिए। बाय। आ जा, कैमरा पकड़ देना थोड़ा। कोई आएगा कि नहीं?